Hello students, in the last class we have discussed the introductory part of this chapter, Elixir of Life, Water, and I explained you what is the importance of water, what amount of water is available on earth for our usage and all. We have discussed, and we have also discussed the importance of water. Today we will discuss about composition of water. Composition of water. Composition means what water is composed of. Then if we will see, water has molecular formula H2O, that means 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen are needed to form a molecule of water. One molecule of water is formed by 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. Now water is a compound, as you have read in your previous class also. What is a molecule of a compound? That molecule of a compound is when more than one kind of atom combined in a fixed number chemically, in a fixed ratio. So here the ratio of hydrogen is to oxygen is 2:1. They are present in 2:1 ratio, which I have discussed. Now as water is a compound, it is having its own property. Water is a compound. Water is a compound, so we cannot break down this molecule physically. There is no such means of breaking down this water molecule physically. Neither this water nor any of the molecule of a compound can be broken into the atoms physically, right? So water is a compound having its own chemical properties. It's unique. It is having its own properties, as I told you earlier in previous chapters also, that whatever compounds are formed, they do not take the property of the constituents atom. So is the case of water. This is how water is formed. Now this molecule of water, which is formed by hydrogen and oxygen, does not carry any property of hydrogen or oxygen. Let's say hydrogen is a combustible substance, it burns. It burns readily, giving enormous amount of energy. Oxygen supports burning. On the contrary, water is used as a fire extinguisher. This was one property, and there are many. Whatever properties are exhibited by hydrogen, whatever properties are exhibited by oxygen, none of the properties are present in water. They break down, form simple in the form of simple atoms. So is in case of oxygen, reunite in the form of water H2O, and then they form this new compound. So this new compound is having its own property. इसकी खुद की properties होंगी. ये वाटर की हाइड्रोजन की या ऑक्सीजन की कोई भी प्रॉपर्टी लेकर के नहीं आएगा. वाटर इज हैविंग इट्स यूनिक प्रॉपर्टी, एंड दीज यूनिक प्रॉपर्टीज वी विल बी डिस्कसिंग. सो वी विल आई विल बी स्टार्टिंग विद द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, which is again an interesting topic. Physical properties of water. What are physical properties? See, if we talk about physical properties, then physical properties are those properties which we can see, which we can feel, which we can touch, which are related with the physical appearance. Okay, appearance, touch, हर चीज़. अब कैसा दिखता है पानी, कैसे स्मेल आता है, कैसा टेस्ट आता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो कंडक्ट करता है नहीं करता, ऑल दीज प्रॉपर्टी, कंडक्टिविटी, मेलेबिलिटी, boiling point, melting point at state, all these are physical properties. So these properties we are going to discuss. If we talk about first property, then water is colorless
There is no color of pure water. Now listen children, one thing very carefully, that whenever we are talking about any of the topic and especially when we are discussing the properties, we are discussing properties of a pure substance. Pure substance की बात करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है. So water is colorless, odorless and tasteless liquid. Tasteless ट्रांसपेरेंट लिक्विड. वाटर कैसा है? वाटर का ना ही तो कोई कलर है प्योर वाटर का, ना ही इसकी कोई स्मेल होती है, ना ही इसका कोई टेस्ट होता है, और ना ही ये और ये ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है. दैट मीन्स इफ प्योर वाटर इज केप्ट इन अ टम्बलर, इफ प्योर वाटर इज देयर, लाइट कैन ईजिली पास थ्रू इट. इट इज ट्रांसपेरेंट इन नेचर. सेकेंड, वाटर is present in 3 states. Solid, liquid, gas. And let me tell you one thing, this is the only substance present on earth which could be present in all 3 states in some places of world. आप देखोगे अगर आप अभी थोड़ा सा विंटर सीजन जब स्टार्ट हो जाता है, और इस वक्त भी देर आर मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेयर वाटर इज प्रेजेंट इन फ्रोजन फॉर्म. In air, water vapors are also present, and there is liquid water flowing in the streams or the glaciers which are being melted slightly. तो liquid water भी है वहाँ पे, solid form भी है, और हवा में present water vapor भी है. ठीक है, all 3 states are present all together. Third, pure water boils at 100 degrees Celsius at 760 mm of Hg. अगर आप प्योर वाटर की बात कर रहे हो तो प्योर वाटर बॉईल होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे 760 mm ऑफ मर्क्यूरी प्रेशर पे. ठीक है, एंड इफ प्रेशर इंक्रीजेज देन बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेज. प्रेशर इंक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा. प्रेशर डिक्रीज होगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा. सो व्हेन यू मूव टू एल्टीट्यूड, यानी आप जब हाइट पर जाओगे तो एयर का प्रेशर कैसा हो जाता है? कम. प्रेशर लेस, बॉइलिंग पॉइंट लेस. दैट मीन्स वहाँ पे प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा. बट हम अगर बात कर रहे हैं प्योर वाटर की एट 760 mm ऑफ Hg, तो प्योर वाटर बॉयल करेगा एग्जैक्टली 100 डिग्री सेल्सियस पे. इन द सेम मैनर प्योर वाटर और freezing point of your freezes at 0 डिग्री. सी न्यूमेरिकल वैल्यू 0 होती है मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट की. 0 से वो फ्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. बिलो 0 इट इज ऑलवेज इन द फ्रोजन फॉर्म. सो प्योर वाटर फ्रीजेज एट 0 डिग्री सेल्सियस एट 760 mm ऑफ Hg. एंड अगेन अगर इसमें वाटर में देर आर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट, इफ देर आर इम्प्योर इट कैन लोअर डाउन द फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर हो सकता है. वाटर कैन डिसॉल्व मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, or you can say most of the substances can dissolve in water. So water is also considered as universal solvent, इसीलिए इसको universal solvent भी बोला जाता है. वाटर में बहुत सारी चीज़ें, सबसे ज़्यादा maximum amount of substance can be soluble or can be dissolved in water. No other liquid has this capacity of dissolving as many number of substances as water can do. So water is known as universal solvent. Other than these properties, there are two, 3 more properties about water. That water has maximum density at 4 डिग्री सेल्सियस. 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी होती है. व्हाट इज डेंसिटी? इफ वी टॉक अबाउट डेंसिटी, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. मास पर यूनिट वॉल्यूम. दैट मीन्स सबसे ज़्यादा हैवी आपको वाटर कब लगेगा?
अब फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर की बात करें तो मैक्सिमम डेंसिटी जो भी वाटर है उसकी मैक्सिमम डेंसिटी आती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। जब उसका टेम्परेचर 4 डिग्री होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही होगा एंड 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर इज द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस विच इज मैक्सिमम। बिलो 4 डिग्री अबव 4 डिग्री वाटर की डेंसिटी हमेशा कम रहेगी। सो दिस इज द रीजन दैट व्हाई ice floats on water. I will explain when we will be reading about anomalous behavior of water. Actually it is in 7th standard, but I'll give you a brief idea but later on. So this is the reason why ice floats on water, क्योंकि अभी उसकी maximum density बाद में फिर से decrease होगी। क्यों होगी that I will explain when we will be studying about anomalous behavior, ठीक है। And that is the reason that ice being solid form of water, in spite of being solid form of water, it floats on water. And one last property is water, pure water की बात करें, pure water is an insulator, it does not conduct electricity. प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर की अगर आप बात कर रहे हो तो वो कभी भी करंट कैरी नहीं करेगा, उसको इंसुलेटर की तरह एक्ट करेगा, आप उसमें कंडक्टिविटी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? बिकॉज देर आर नो फ्री आयंस प्रेजेंट, दिस इज अ कंपाउंड एंड इफ देर आर ओनली मॉलिक्यूल ऑफ H2O and H2O, no charge carrying ions are present. So there are no carriers for conducting that heat or electricity, and that is why water is an insulator. Pure water, we are talking about pure water. So these were the physical properties of water. Two things we have discussed today, that water is a compound and another thing is physical properties of water. In the next class we will be reading about depletion of water table, how groundwater is recharged, what is groundwater and water cycle. We have done already water cycle as a brief in the last class also, but now in detail we will be reading each and every step, and also we will be reading about the types of clouds formation and in the process of water cycle. ठीक है, ये सब कुछ हम करने वाले हैं. Chemical properties are not there in your syllabus, it would be in 7th standard. Physical properties are there, so please learn them by heart, and we will be studying next topics in the next class. Thank you.